At a special ceremony held at GHQ Rawalpindi to mark 1 year of Marka-e-Haq, Chief of Defence Forces Field Marshal Asim Munir delivered a strong warning to India against any future military misadventure. Addressing senior military leadership and participants of the ceremony, Field Marshal said any future aggression against Pakistan would invite far-reaching, dangerous and painful consequences. शिकस्त खुर्दा हिंदुस्तान ने अमेरिका की सियासी क़यादत के ज़रिए सालसी की पेशकश की, जिसे पाकिस्तान ने खित्ते के वसीतर अमन की खातिर कबूल किया। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। He said India's attempt to test Pakistan's resolve during the May 2025 conflict had failed and said Pakistan's armed forces responded with full force and national unity. Field Marshal Asim Munir said Pakistan had demonstrated that its defense was fully impregnable against external aggression and warned that country remained fully prepared to defend its sovereignty and territorial integrity. The army chief said India's ambitions were bigger than its capabilities, saying Pakistan would never allow any effort to alter the regional balance of power. He also praised country's civilian leadership and said Pakistan's global stature increased manifold in the aftermath of the war. मार्का-ए-हक में मिसाली फतह ने हमारी खारजा पॉलिसी और सफारती अहमियत पर बराह रास्त मुस्बत असरात मुरतब किए। पाकिस्तान का ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बायमी दफाई मुआहदा हमारी सफारती कामयाबियों का एक अजीम संग मील है। ये दहशतगर्दी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जारी है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे। He also highlighted Pakistan's modern war preparedness, saying future conflicts would involve cyber warfare, drones, artificial intelligence, and long-range precision systems. The ceremony at GHQ included wreath laying at Yadgar-e-Shuhada and Guard of Honor by the contingents of the armed forces.